हेलो बहुत प्यारे से बच्चों। सो टुडे अगेन आई एम विथ यू विद द क्लास 9th टॉपिक इज लाइन्स एंड एंगल्स and I hope the people are here to listen and to understand. So although I have given the time to join the class by 6:30 due to the internet connectivity, I become a little late, but yes, I am here. Here are also few questions that we are going to discuss during this. So these are the basic questions which we are going to discuss, as well as we are going to do the application based questions also. You all can see here. So these are the application based questions also on the lines and angles, and there are n number of questions we have. So for understanding the questions you have to stay here. तो आप यदि क्लास में बने रहते हैं तो यू विल गेट द चांस टू लर्न. सो माय सजेशन इज दिस, that ask your friends to join the class also, so that I could proceed with the questions very easily. Till then I am just preparing to write the question. This is also one of the question which is very important to discuss, this one. Okay, and this one is also as well important. So I hope all of you are here. So let us start with the question without delay. So in this question you all can see, in the given figure L1 is parallel to L2 and you have to find out the value of x. This is the question that you have to solve, right? So I hope all of you are ready. So let us start with this question at first. So at first we are going to make the diagram of this question. All can see this question. This is the question number 26. Till then everybody just see the questions diagram, make the diagram, write the question. It will be helpful for you to understand the question very easily. So at first the question says that L1 is parallel to L2. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि L1 is parallel to L2, that we are going to do. L1 parallel to L2. This is L1 and this is L2. I hope it is visible. If not visible, let me know. Then this is angle 37 degree, right? One more line is there which is coming here, and this angle is 58 degree, and this is x. You have to find out this x, right? तो अब इसको आपको कैसे करना है, you have to understand this. ठीक है, तो बहुत easy है वैसे तो. देखिए, the very first thing you all can see here, that as this is the angle which is vertical opposite, so this will become 58 degree. Let's say its value is x. Let's say its value is y. So y equals to 58 degree. Reason is vertical opposite angle. Now I just say this is z. So if you just see, this L1 is parallel to L2. That's why this angle and this angle, they both are on the same side of the transversal, and one is exterior, one is interior, so they are the corresponding angle. So this z is also 37 degree. Now 37 degree plus 58 degree plus x, they all are forming the straight angle. So in this way you can find out the value of x. So I hope that now solution is clear to everyone. Now how you are going to present the solution, it is also important. So solution L1 parallel to L2. The very first thing you have to write. After that, on line L2, okay, z equals to 58 degree. रीजन क्या है इसका, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल
Similarly, y equals to 58 degree, z equals to 37 degree. रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. Now x plus y plus z equals to 180 degree. Those who are here in my channel, please like, share and subscribe my channel. Straight angle. This is straight angle. Put the values 37 degree plus 58 degree plus x equals to 180 degree. Solve them. So you are going to get 95 degree plus x. 8 plus 7, 5, 15, 1 left. 5, 3 plus 8 plus 1, 9, 180 degree. तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 डिग्री minus 95 degree. So here the answer will come x equals to 85 degree. So in this way you can solve the question. If anyone having any query, you can ask it. Have you understood this question? The question was L1 is parallel to L2, right? Hope you understood this question. Or any doubt, please you can send your doubt in the chat. Okay. Now moving to the next question. Here is the next question. The question says, in figure x equals to y and angle A equals to B. Prove that L is parallel to M. So here there are the three lines, right? L, M and N. आपको उनको प्रूफ करना है कि दे आर पैरेलल. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यू जस्ट चेक what is given here, that angle x equals to angle y. Angle x is made on line L while angle y is made on M. Both of them are on the same side of the transversal. They are, one is exterior and one is interior. That means they are which kind of angles? Corresponding angles. So what will happen? When the corresponding angles are equal, that means the lines are parallel. तो पहले आपके पास क्या मिला? एक इक्वेशन कि L is parallel to M. Now come to the question second part. What is given to you? A equals to B. यहाँ पर A और B कैसे हैं? पैरेलल हैं. दोनों ही आपके corresponding angle हैं. Same side of the transversal. One is interior, one is exterior. तो corresponding angle है, same side पर है. तो what will happen? M is parallel to N. This is equation 2. Now when we compare M and N, L is parallel to M, M is parallel to N. मतलब M is parallel to both. What we comparing equation 1 and 2. What we have found? L is parallel to M, is parallel to Aditya Kishore Jaiswal. The very first thing, like, share and subscribe my channel, like this video. Okay? And you just send me your queries and when you can take the class. That time also you mention. तो मैं उसी टाइम पर ही आपकी क्लास लूँगी, राइट? तो मैं आपको स्टार्टिंग से टिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगी. एंड टेल मी द क्लास ऑल्सो. क्लास 10th की टिग्नोमेट्री आपको पढ़नी होगी, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको कब पढ़नी है. वैसे क्लास 10th का तो अभी 17th को एग्ज़ाम है, मतलब कल ही तो है एग्ज़ाम. या आपको कौन सी क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है?
So please tell Aditya, so I could help you in a better way. Okay? Please write in the chat box कि when you want to study in which. ओके आप अभी क्लास नाइन्थ में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप पहले क्लास नाइन्थ के आपके एग्जाम्स कब से हैं? सो एल विल बी पैरेलल टू एम. तो अब एल विल बी पैरेलल टू एन. फिर मैं स्टार्टिंग से आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पढ़ा दूंगी. ओके, लास्ट एग्जाम इज ऑन 19th. तो माय सन्स एग्जाम्स आर गोइंग टू बी एंड ऑन 26th of Feb. तो फ्रॉम 1st of March I will start the classes for class 10th. So from the class 1st of March I will start teaching trigonometry. Okay, so you don't worry, I will surely teach. और यदि मैं भूल जाऊं तो आप मेरे you just subscribe my channel and put the message in the chat box. मेरे और भी वीडियोस देखिए थोड़ा से, और फिर उसके बाद जो है what is this meaning, what will you read it in real life? मतलब इसका क्या मतलब हुआ? what would you will you read it in real life? ये चीज समझ नहीं आई मुझे आपकी. आप क्या पूछना चाहते हैं आदित्य? Okay, moving to the next question. Actually, some of students of class 9th have demanded to teach lines and angles. That's why I have taken selective questions of lines and angles. अच्छा, ट्यूशन क्लासेस. हाँ, मैं ट्यूशन क्लासेस भी लेती हूँ. वेयर डू यू रिसाइड? हाँ, ट्यूशंस भी लेती हूँ मैं. आप कहाँ रहते हैं? आई थिंक दिस प्लेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हियर. तो मतलब वहाँ से तो आप नहीं आ पाओगे मेरे से क्लासेस लेने. लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि यूट्यूब पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा सकती हूँ रेगुलर क्लासेस लेकर. बट उसके लिए आपको रेगुलरली मेरे चैनल पर एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब यू हैव टू पुट द मैसेज. तो इन दैट वे आई कुड हेल्प यू टू टीच. और उसके लिए सबसे पहले आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा. और ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ मैं बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ. श्योर, आई विल डू इन दैट वे ऑल्सो, no problem. Then I will make the long videos. You can see that long videos, no problem. Thank you for liking the video. Okay, so this is the question. Here one more question is there. In figure AB parallel to CD, in figure AB is parallel to CD, then find the value of x that you have to do. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इसके दो तरीके हो सकते हैं. If you just observe this question, if it is coming in MCQs, the best way is this. The very first thing, you just see this x. This x is indicating the reflex action, reflex angle. If you just see here to here, it is coming the reflex angle. So what you do, at first you just sum this 45 and 30 degree, right? After doing the sum of this, subtract it from 360 degree, because इस point पे, this point पे, at this point you are going to get the angle x. ठीक है? तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि इस point पे angle x बन रहा है, and this is on this side where these two acute angles are there. तो line AB is parallel to AC, this CD. तो सबसे पहले आपको क्या given है? Given AB parallel to CD. ठीक है? Both of them are the acute angle. तो just find out the value of x. 360 degree minus 45 plus 30 degree, right? तो यहाँ पर आप करेंगे तो what you are going to, आप इतना करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा ये ट्रिक होती है.
सेम आंसर आएगा. एंड कंसेप्ट इज नॉट रॉन्ग. बाइसेक्टर की जरूरत नहीं है और पैरेलल लाइन की भी जरूरत नहीं है. मतलब दोनों केसेस में कर सकते हो आप. 360 माइनस 575 इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? 285 डिग्री. एक तो तरीका ये होता है. दूसरा तरीका ये है कि यू जस्ट ड्रॉ अ पैरेलल लाइन. ड्रॉ, लेट्स से पी क्यू. ड्रॉ, it is the second method. Second method is draw PQ parallel to AB parallel to CD, right? So here this angle, let's say, will become A and this angle will become B. The value of angle A is 45 degree. Reason? Alternate interior angle. Value of B equals to 30 degree. Reason is same. ठीक है. तो you are going to get A plus B. तो A plus B you are going to get 45 degree plus 30 degree. That is 75 degree. Or value of x equals to 360 degree minus 75 degree. You are going to get x equals to 285. Same process. Same answer you are going to get, but in a shorter way. So I hope this is clear to you. देखो फर्स्ट मेथड में रीजनिंग सिंपल है. इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे एंगल बन रहा है. इफ यू जस्ट सी दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे बोथ आर एक्यूट एंगल. तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ट्रांसवर्सल जो जा रही है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, देयर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एंगल विल बी मेड. नाउ इफ यू जस्ट सी द टोटल एंगल इज 360. ओके. तो यहां पर if you just do the sum of this and subtract it from 360, you are going to get this. ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है. यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो. यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो. मतलब ये मेथड आपका एमसीक्यू मेथड है कि एमसीक्यू में आपको समझना कैसे है. एंड दिस मेथड इज, सपोज क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क and descriptive method is there, then in this case you have to do this. दोनों में आंसर्स आपका सेम आएगा. रीजनिंग सेम ही है. आपको इन दोनों को सम करके 360 से सब्ट्रैक्ट करना है. बिकॉज व्हेन यू ड्रॉ द पैरेलल लाइन passing through this x, this point. So here this is z, here also this is z, alternate interior angle. तो पहले आपने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फाइंड आउट किया, देन दोनों को सम कर दिया. सम करने के बाद अब उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यू विल गेट द आंसर. ठीक है. हाँ, बोथ वेज आपको आने चाहिए. बिकॉज जब एमसीक्यूज बेसिस पे आता है तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वुड बी द रीजनिंग. एंड एमसीक्यूज ऑलवेज यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द long step-wise questions. So one more question is there. If you have any question from your end, you can give me that question also. I will help you to do that question also. So this is one of the question. You just read this question. In the given figure, PQ is parallel to RS and EF is parallel to PQ is parallel to RS, EF is parallel to अच्छा कर दिया मैंने, एस मार्क कर दिया. दोज हु आर हियर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Yes. Now could you tell me how to solve this question? Any idea? Yes.
They are saying EF is parallel to QS, PQ is parallel to RS. Find the value of PQS is given 60 degree. Then find the value of angle RFE. So could you have any idea how to find it out? बहुत easy है वैसे ये question. Any idea? By making a parallelogram, otherwise simple. You just see this, you just turn the figure like this. PQ is parallel to SR. If you just see angle Q and angle S, PQ is parallel to SR and this QS is working as a transversal, right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि this angle Q and S they are forming the co-interior angle. ठीक है? तो सबसे पहली चीज यहाँ पे without doing any extra we can say that PQ is parallel to RS. It is given to you and QS is transversal. ठीक है? So angle Q plus angle S equals to 180 degree. Reason is co-interior angle. तो एंगल S की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120 डिग्री. ठीक है? तो यहां पर हमारा 120 डिग्री आ गया. अब this angle is 120 degree. Now again one more thing has been given to you. This is coming 120 degree. Now you just see QS is parallel to EF. So S and this angle they are which no problem. With the practice it comes, Aditya. It takes time to do the questions in the shorter way. वो भी तरीका सही है आपका. आप इसको पैरेललोग्राम बनाकर भी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब दिस विल बी 60 देन यू कैन फाइंड आउट बाय द लीनियर पेयर 120. तो in the geometry there are so many ways to do the same question. तो एंगल S equals to angle RFE. It is better you are able to think. सबसे अच्छी चीज होती है कि आप सोच पा रहे हो कि आपको एंगल कैसे निकालने. एक तरीका आपको पता है, एक तरीका मैंने बता दिया. तो नाउ यू आर हैविंग द टू वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है? तो परेशान नहीं होना है कि मैं लंबा मेथड कर रहा हूं. आप मेथड सही कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो हियर इन दिस वे एंगल आर एफ ई यू कैन कैलकुलेट. एनी प्रॉब्लम एनी इन दिस क्वेश्चन? अब यहां पर एक और क्वेश्चन आ जाता है आपका. दिस इज द क्वेश्चन. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन दिस क्वेश्चन? Yes, this is called positivity. Very nice. Okay. Now, could you please tell me the reason? That's good. Very nice. Okay. Can we discuss this question a little faster? Without solving, can you please tell me how you can find out the value of x and y? By the mental maths, can you tell me how to find out the value of x and y? Here, AB is parallel to CD given. हाँ तुम बताओ. Yes, I am giving you. सबसे पहले इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? x की कि y की? हाँ, क्या वैल्यू आएगी y की? y 180 नहीं y प्लस 7 नहीं y के साथ किसको प्लस करेंगे? 5 प्लस x. EF is parallel to CD है ना, तो y के साथ किसको ऐड करेंगे? 180 180 कहाँ है? 150 150.
हाँ तो जल्दी करो। 5 plus 150 equals to 180. तो आया 40. हाँ 30. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आदित्य? आप सिंपली सिर्फ कैलकुलेट करके बताओ मुझे y की वैल्यू कितनी आएगी। 30. y will be equals to 30 डिग्री. रीजन इज को इंटीरियर एंगल. वेरी गुड. अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Y equals x plus 70 equals to 180. क्यों? 3 नहीं. क्यों? अब कौन सा एंगल बन रहा है? दिस उस एंड साइड दिस. alternate हाँ interior. तो x equals to नहीं, ये एंगल टोटल कितना होगा? एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी? 30. नहीं, 30 plus x equals to 180. नहीं, 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180 कहाँ से आएगा? एक्स Equals 30 to प्लस. 70. हाँ. तो 50 आएगा. मतलब हाँ मतलब उस 40. यस. राइट राइट राइट. वेरी गुड. 40. तो यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन आदित्य. वेरी गुड. नाउ कुड यू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो तुम्हारा y की भी वैल्यू निकाल ली तुमने, x की भी वैल्यू निकाल ली. बहुत बढ़िया. अब तो तुम जो बता है. सकते हैं. गुड. गुड सिद्धांत. यस. नाउ ओके. ठीक है. ओके. सो नाउ मोर क्वेश्चंस आर देयर टू डू. Okay. Bye. So now more questions are to do. Have to be done. So let us move to the next question. The question says, if an angle, bye beta, if an angle is 20 degree more than 3 times the given angle, if the two angles are supplementary, find the angles. Right? The question says this. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हमें समझना पड़ेगा. वेरी फर्स्ट थिंग, लेट द एंगल बी x. लेट द एंगल बी x. तो इफ एन एंगल इज 20 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स द गिवन एंगल, हमने ये एंगल अज्यूम करा है, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड एंगल इज 2x plus 20 degree. If the two angles are supplementary, find the angle. That means कि suppose if I say कि second angle is supplementary of first angle, that is equals to 180 minus x. To find out the angles. तो second angle की वैल्यू कितनी है? 2x plus 20 equals to 180 minus x. तो 2x plus x equals to 180 minus 20. So here it will come. Oh sorry, यहाँ पे 3x था 3 times. तो 3x plus this 4x equals to 160. तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 डिग्री. तो when x is equals to 40 degree, so the value of another angle, so one angle is 40 degree, another angle is 140 degree. This is the way you can solve the questions. Okay. Now, if anybody is having the questions and queries from your end, you can put it here. I will try to solve it. And those who are here, please like, share, and subscribe my channel. If you have the query, you can ask your queries. There are many problems. The two peoples are here. Please like, share, and subscribe my channel. Here the question says, this is parallel to this. Find the value of x. ठीक है. इस क्वेश्चन को करने के लिए आप चाहें तो सबसे पहले इस you can put it like this, right? And then it will become very easy. This is parallel to this. Okay. So you can find out this if the angle is made on the same side. मतलब यहाँ पर कोई एंगल होता सपोज, तो ये हो जाता y.
तो y इक्वल्स टू 360 माइनस 57 प्लस 40, और x की क्या वैल्यू होगी 57 प्लस 40। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, दैट विल कम। तो x इक्वल्स टू, इसको कर सकते हैं एज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, और यू कैन मेक अ लाइन ऑल्सो पासिंग थ्रू इट। तो आप फिर पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकालेंगे, देन दोनों का सम करेंगे, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। एज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, सो x इक्वल्स टू 57 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दैट विल कम x इक्वल्स टू 7 and 97। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन calculate the angle. Now if those who are here, if they have any doubts, they can ask, because I have taken the class almost for the, I am taking the class almost for an half hour. तो मेरे ख्याल से मतलब if you have the doubts, now you can put your doubts yourself. So I will provide you the query, help you to solve the queries. And if you are fine, if you are liking, sharing and subscribing my channel, it will be helpful for you also and for me also. तो आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, otherwise I would like to wind up the class. Yes, any doubt is there? Okay, if no doubt is there, so I think I need to wind up the class. I need to, you can just try this question also if you want. The question says, what is the complement of 90 degree minus a? तो ये एंगल है आपका, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 degree minus a equals to 90 minus 90 degree minus a. Finally, answer will come a. Try this question.